क्या आप जानते हैं गणेश का मतलब? गण का अर्थ है समूह और ईश का अर्थ है ईश्वर या भगवान। श्री गणेश वह परम ब्रह्म है जो हमें दिव्य चेतना से जोड़ते हैं और वे हमारे प्रथम गुरु है। जैसे गणपति बापा हमें शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं, सफलता भी देते हैं, वैभव उत्पन्न करते हैं और सदैव हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमें भी मन और हृदय से सभी से प्रेम करना चाहिए। संकट के समय यथासंभव मदद करनी चाहिए। यह सब योग के माध्यम से संभव है, क्योंकि ध्यान और योग के माध्यम से मन और शरीर शुद्ध होते हैं, विचार शुद्ध होते हैं, हम शक्तिशाली बनते हैं, हमें सहन करने की प्रेरणा मिलती है और हमें शांति से सभी सुख प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं गणपति बापा के नाम पर 5 योग आसन जो हमें रोग मुक्त, बुद्धिमान, शक्तिशाली, कीर्तिमान बनाएंगे और उससे गणपति बापा का आशीर्वाद भी हमेशा मिलता रहेगा। Okay, so now first exercise is Om chanting in Muladhara Chakra. For this exercise, you can sit on the pillow or you can sit on the bricks. Right now, I sit on the bricks. Okay. So now, keep your back straight. Keep your hands like this in Trimurti Mudra. This is called Trimurti Mudra. So first finger and thumb touching with each other like this, and rest of the fingers touching with each other like this. Yeah. So now keep your hands like this under the navel, and now close the eyes. Slowly breathe in, open your shoulder, relax your face, calm down yourself. Slowly breathe in, observe yourself, and slowly breathe out. One more time. Breathe in and chant Om. Last time. Breathe in 2 times. Close eyes, relax your hands in Gyan Mudra on the thighs. Slowly breathe in and slowly breathe out. Now slowly open your eyes, relax your fingers and relax. Okay, so now next is Yoga Mudra Asana. In Yoga Mudra Asana, we have to interlock the fingers from the behind. Okay, so now stretch your hands and now stretch your shoulders, interlock the fingers, breathe in, stretch your neck muscles also. Now twist on left and slowly go down with breathe out. Just go down as much as you can. Relax your shoulders, relax yourself. Now slowly again come up with breathe in. And now slowly twist on right and go down with breathe out. It is good for the kidney also. It is good for the back. It is good for the spine. And it is good for the mind. Come up with breathe in. And then slowly relax yourself with breathe out and relax. Now next is Anulom Vilom in Gyan Mudra. Gyan Mudra means first finger touching the thumb. First finger touching the thumb and rest of the fingers straight. Keep your left hand on the left side of the thigh, right hand in Krishna Mudra. First fold 2 fingers and rest of the fingers straight. Now thumb on your right nostril, breathe in from left. Close the eyes, open your shoulder, back straight, slowly breathe in. Close your left nostril, slowly breathe out from right. Slowly breathe in from right, slowly breathe out
and relax. Relax your hand, both the hands in Gyan Mudra on the thighs. Slowly breathe in and breathe out. Slowly open your eyes and relax your fingers and relax. Now next is shoulder stretch in Sukhasana. So coming in Sukhasana, we have to sit in Sukhasana and now shoulder straight like this. Keep your left hand and right hand near the hips and now stretch your shoulders, stretch your neck muscles, back muscles, spine muscles with breathing. And then slowly relax your left hand, right hand and relax yourself and relax. Now next is Ganesh Mudra. So Ganesh Mudra is keep your right hand under the chest over your left hand. Interlock the fingers like this. Keep the thumb side of the palm. Keep your hand center of the chest. Close the eyes, concentrate on yourself. Observe your heartbeats, your thoughts and relax yourself and do it. Slowly breathe in and slowly breathe out. Slowly breathe in, pray to God. Slowly breathe out, feel relaxed. Now breathe in and chant Om. Breathe in 2 times. Relax your fingers. Rub the hands. Cup the eyes. Open your eyes inside the palm. Close the eyes. Slowly move your hands, end of the eye area and fingers center of the head. Stay there till 6 to 8 seconds. Relax your hands on the thighs in Gyan Mudra. Slowly open your eyes, relax your fingers and relax. मिथक के कुछ संस्करणों के अनुसार भगवान गणेश का सिर एक हाथी से प्राप्त किया गया था। उनका हाथी दांत बौद्धिक शक्ति, अनुकूलनशीलता का प्रतीक है और वह ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। गणपति बापा रिद्धि सिद्धि के दाता, संकट मोचक, शक्तिशाली और बुद्धिमान है। वह हमें खुले दिमाग रखने, विवेकपूर्ण तरीके से सोचने और ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा देते हैं। भगवान गणेश हमारे शिक्षक और मार्गदर्शक है। भगवान गणेश आपके मिशन को नई दिशा देकर और सभी बाधाओं को दूर करके आप पर कृपा बरसाए। गणेश चतुर्थी के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी कठिनाई और बाधाओं दूर करने वाले भगवान आप पर अपना आशीर्वाद बरसाए। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।